Good morning, students. I hope you all are doing great. Class 4, Subject Social Studies. Lesson number 1 from page number 3 and 4. Lecture number 4, Maps with different titles, Political Map and Physical Map. In today's class, we are going to study about the map. Two types of map, political map and physical map. We have two types of map to locate the different types of places on the basis of different types of categories. Now come to learn about the map. There are actually many types of map, but we are going to be focusing on only political map and physical map. What is physical map? Physical map is going to tell you what are the features of the earth. Something is naturally there on earth. Map. Basically, physical map shows you the natural features of the earth, something like trees, mountains, deserts, lakes, rivers and etc. The map that we see here, it's a physical map. Physical maps shows the physical features of an area, such as the mountains, rivers, seas, plateaus and lakes, etc. by using colors. Physical map don't have the many boundaries. So, this map are used to locate geography of many region. The word geography means to the physical features of any area. Those physical features includes the plateaus, rivers, grassland and etc. Lots of different things are there which are located in the physical map. Now, political map. The map shows here is a political map. Political maps shows the states, national boundaries, capitals and major cities of a country. Political map shows different boundaries for different states and countries. स्टूडेंट, आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा मैप फिजिकल है और कौन सा मैप पॉलिटिकल है? तो बिट स्टूडेंट, जिस मैप में आपको स्टेट्स और बॉर्डर्स बने हुए मिले तो समझ जाइएगा वो मैप कौन सा होगा, पॉलिटिकल होगा। और जिस मैप में नेचुरल फीचर्स यानी डेजर्ट, प्लेन एरियाज़ और माउंटेन्स को शो करवाया जाए वो कौन सा मैप होगा, वो फिज़िकल मैप होगा। ठीक है, पॉलिटिकल मैप में बॉर्डर्स और स्टेट्स को शो किया जाता है, फिज़िकल मैप में नेचुरल फीचर्स को लाइक माउंटेन्स हैं, प्लेट्यूज़ हैं, डेजर्ट हैं, ये किस मैप में शो करवाए जाते हैं, फिज़िकल में। वाटर इज़ शोन इन ब्लू, green is used for showing plain areas, brown is used for mountains or hills. Students, कैपिटल सिटीज़ को हमेशा स्टार्स से शो करवाया जाता है। स्टूडेंट्स, लुक एट दिस, फॉर एग्जांपल इट्स अ मैप। तो देखें यहाँ पर सिटीज़, विलेजेस, टाउन्स एंड बाउंड्रीज़ को शो किया जा रहा है। सो स्टूडेंट्स, जिस मैप में स्टेट्स मीन्स सिटीज़, विलेज, टाउन और बाउंड्रीज़ को शो किया जाता है वो कौन सा मैप होता है, वो पॉलिटिकल मैप होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, और जिस मैप में ट्रीज़, माउंटेन्स और वाटर बॉडीज़ शो किए जाएं, वाटर बॉडीज़ मीन्स सीज, लेक, पॉन्ड्स, जिस मैप में ये चीज़ें शो की जाएं वो कौन सा मैप होता है, वो फिज़िकल मैप होता है। फिज़िकल मैप में नेचुरल फीचर्स को शो किया जाता है। स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन पॉलिटिकल मैप एंड फिज़िकल मैप. It's all about today's lecture. I hope everything is clear to you. Thanks for watching. All the best.